So, hello and hi everyone. Welcome back to my session. This is a session on ICSE Class 7 English Literature and it is presented by me, Simran Priya. We have already started a discussion on this particular story. This is a very interesting story that is narrated by a plant, that is a rubber plant. The story name is the rubber plant story and this is part B, bacha. If you haven't watched this part A, go ahead and watch part A so that you have a better understanding and a clearer concept of this particular story. Okay, now let's start with our session. Before starting my session, let everyone join in so that I can, what you can do in the meanwhile, if you like my session, do hit the like button and also subscribe to my channel if you are new to my channel. And also what you can do, go join me on Telegram and on Instagram. The link is given in the description box below, so you can join me from there. And till then, I will introduce myself to you. So my name is Simran Priya, and this is me. I have done my graduation and my masters from Delhi University. Currently, I am teaching in an ICSE school. I would like to say hello and hi to every learner. Sanju Kumar, thank you so much for liking it. Pooja Dubey, thank you bacha for joining. Sujit Kumar, Kunal Kumar, Sanyukta Kumari, Sanju Kumar, BTS fan girl, Sujit Gupta, everyone, thank you so much for joining in. If now let's move forward and let's start with this session without wasting any time. Moving ahead, we have already done till the rubber plant was now out for a sale and one person came in. Now one person came in and he wanted to take that rubber plant, but what happened? One afternoon, a girl came along and stopped to look at me. Now, there was a fine afternoon when a girl came in and she stopped and looked at me. वो खड़ी हो गई, वहां पर रुकी और मुझे मेरी तरफ देखने लगी. She had dark hair and eyes. उसकी बाल भी dark थी, that is black hair and black eyes, and she looked slim and sad around the mouth. So she was very slim, वो बहुत slim थी, and she was also looking very sad. Okay, with his by looking at his mouth, I can say that she was looking very sad. Okay. Oh, she said. She says to herself, I never thought to see one up here. So उसने मेरी तरफ देखा और उसने मुझे देखते हुए अपने आप से कहा, ओह, I never thought, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर दिखोगे. She pulled out a little purse about as thick as one of my leaves and fingers over some small silvers in it. So वो क्विकली अपना छोटा सा पर्स निकालती है. उसकी पर्स एकदम उतनी ही मोटी थी जितने मेरे एक पत्ते मोटे थे. सो एक पतली दुबली पर्स थी. तो उसने अपने उसमें फिंगर्स डाले और वहां पर कुछ सिक्के थे तो उसने उस सिक्के को निकाला. Old Corin, Old Corin, always on the lookout, is ready rubbing his hands. So ओल्ड कॉरिन इतना एक्साइटेड था, वो किसी भी प्राइस पे मुझे दे सकता था. So he was already rubbing his hand कि अब मुझे पैसे मिलेंगे. At last coin and she come together at 39 cents. So they both coin and she bargained a little और दोनों मान गए कि 39 cent में वो मुझे दे देगा. And away she goes with me in her arms. So she took me in her arm and she went ahead. Okay. So उसने मुझे अपने आर्म में लिया और वो चली गई. Now she was a nice girl. This new owner was a nice girl, but not my style. But मेरी तरह नहीं थी जैसा the people I am fond of. So उस तरीके की ये नहीं थी, but she was a nice girl. She was too quiet and sober looking. वो बहुत ही quiet थी, बहुत ही naive थी, बहुत ही sober looking थी. So वो ज्यादा ऐसा चहल पहल नहीं, बहुत शांत सुशील लड़की थी. I told myself I will just about land on the fire escape of a tenement 6 stories up. So ये मुझे I would say to myself
ये क्या थी? ये क्या थी बच्चा? बच्चा सेंट, सेंट यूनाइटेड स्टेट की करेंसी है. इट इज नॉट द यूजुअल करेंसी. सेंट मतलब होता है एक पेनी. ओके, डॉलर का जो खुदरा होगा वो सेंट होगा बच्चा. सो यूनाइटेड स्टेट्स की वो करेंसी है. यस, यस, एब्सोल्युटली. बीटीएस फैन गर्ल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो ये प्लांट अपने आप को बोलता है कि मैं छह छह अभी तक मेरी जितनी जर्नी थी 6 महीनों में, उसमें मैंने आपको 6 तरीके की स्टोरी बता दी. And I will spend the next 6 months looking at clothes on the line. और मैं आगे की जो मेरी 6 महीने होने वाले हैं उसमें मेरे पास ज्यादा स्टोरी नहीं होने वाली है. क्यों? क्योंकि मैं बस क्या देख रहा हूँ, कपड़े को रस्सी पर सूखते हुए देख रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है. शी इज अ नाइस गर्ल. ओके. Okay, Durga Kumari, very soon I am going to come up with that session for 6th standard. Do not worry, bacha. I will be coming up very soon. Now, but she carried me to a nice little room, only 3 flights up in the quiet and a decent street. So वो, लेकिन उसने क्या किया, मुझे एक बहुत खूबसूरत से लिटिल छोटे से रूम में ले गई, जो सिर्फ स्ट्रीट से 3 सीढ़ियों ऊपर ही वो रूम था. सो वहां पर वो मुझे एक डिसेंट क्वाइट से स्ट्रीट में वो रहती थी. सो वो वहां मुझे ले गई. सो आई विल नॉट हैव मच गॉसिप. मेरे पास ज्यादा गॉसिप नहीं होगा आपको बताने के लिए, ज्यादा स्टोरीज नहीं होगी. बट आई वॉज लिविंग इन अ नाइस प्लेस. ओके. And she put me in the window, of course. And then she went to work and cooked dinner for herself. और उसने मुझे वहां पर ले जाकर कहां पर रख दिया? On the window. Now, rubber plants are always kept on the window. So, वो अभी क्या करती है? वो क्या करती है बच्चा? वो she put me in the window, of course. वो बोलते हैं कि of course उसने मुझे खिड़की पर फिर से रख दिया. और वो क्या चली गई? वो अपना काम करने, अपनी डिनर बनाने चली गई. And what do you suppose she had? और फिर ये प्लांट हम लोग से पूछते हैं, और तुम्हें पता है उसने डिनर में क्या खाया? ब्रेड एंड टी एंड अ लिटिल डैब ऑफ जैम. सो उसने डिनर में अपने लिए क्या बनाया? उसने ब्रेड लिया, चाय बनाई, और थोड़ा सा जैम ब्रेड पे लगाकर उसने खा लिया. नथिंग एल्स, नॉट अ सिंगल लॉबस्टर. So the plant is like gossiping now that the plant is saying that the girl is like ekdam aisa broke hai. She is very quiet, she is very sober. She was having the simplest meal, not even a lobster. वो एक lobster भी नहीं था उसके पास. She was having bread, tea and jam. Okay. Now, moving ahead, after she had finished her dinner, my new owner came to the window and leaned down close to my leaves and cried softly to herself for a while. So, अब ये जो मेरी नई ओनर है, वो मेरे पास आती है डिनर करने के बाद, और वो विंडो पर ऐसा लीन होकर मेरे पास थोड़े मेरे क्लोज आकर वो अचानक से रोने लगती है धीरे धीरे अपने में ही. It made me feel funny. Now this made me feel funny. बच्चा, डैब और जैम मतलब एक थोड़ा सा जैम को ब्रेड पे थोड़ा सा ऐसा लगा दिया, डैब कर दिया, बस हल्का सा जैम लगा दिया. ओके. सो जब वो लड़की मेरे पास आती है और वो हल्का सा रोने लगती है मेरे पास ऐसा झुककर, इट मेड मी फील फनी. ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था. आई नेवर न्यू एनीबॉडी टू क्राई दैट वे ओवर अ रबर प्लांट बिफोर. सो मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा था कोई रबर प्लांट के पास आकर उसे पकड़ के ऐसे रोने लगेगा. सो इट मेड मी फील फनी. ठीक है. She touched my leaves like she loved them, and she bent down her head and kissed each one of them. Now she did what? Now she touched my leaves, all the leaves that I had. She touched them, and the touch was like that. She loved the leaves, and she was in love with that leaves. And then she bent down her head and kissed each one of the leaves. Who never was like that to me before? इसके पहले मेरे लिए घर का मतलब कभी भी ये नहीं था कि कोई मेरा ओनर मेरे पास आके रोए या मुझे किस कर रहा है या मुझे टच कर रहा है. Generally, I used to get chewed by poodles and have
their shirt waist hung on me to dry and get watered with coffee rounds and peroxide of hydrogen. So जनरली मेरे साथ क्या होता था मुझे प्रूडल्स ऐसा चबा जाते थे या फिर मेरे साथ क्या होता था बच्चा कि या फिर मेरे पास शर्ट मेरे ऊपर किसी ने फेंक दिया हो कि वो सूख जाए मेरे ऊपर लटका दिया हो या फिर प्रूडल बच्चा क्या है प्रूडल मतलब क्या है प्रूडल इज अ ब्रीड ऑफ अ डॉग डॉग का एक ब्रीड है एक डॉग की प्रजाति है डॉग का ब्रीड है सो या फिर मुझे कुत्ते चबा जाते थे प्रूडल्स चबा जाते थे या फिर मेरे पास शर्ट सूखने के लिए रख देता था कोई या फिर मुझे कभी कभी कॉफी से कोई वाटर कर देता था या फिर मेरे ऊपर पेरोक्साइड ऑफ हाइड्रोजन आ जाती थी सो मेरे पास कभी भी कोई आकर इतना अफेक्शन नहीं दिखाया है. Thank you so much, Janvi, for acknowledging my efforts. Thank you so much, Bacha, for this. I am really glad that I am helping you out, you all out, and I'm really glad that you have asked me for this help. And if ये कहीं से भी आपके लिए beneficial होता है, so I'm more than happy to bring more such sessions for you. Okay. Moving ahead, शर्ट वेस्ट मतलब क्या होता है बच्चा शर्ट का आखिरी पार्ट शर्ट का आखिरी पार्ट शर्ट वेस्ट को मुझे मेरे पास क्या आकर लटका दिया जाता था ताकि वो सूख जाए ओके यस moving ahead this girl had a piano now इस लड़की के पास एक पियानो भी था she used to disturb it with both hands while she made noises with her mouth for hours at times so he is saying the plant is saying that she had a piano और वो क्या करती थी उसे जाकर पियानो में वो अपने दोनों हाथों से उसे डिस्टर्ब करती थी she was not actually playing it but disturbing the piano it is a funny remark and she was making noises with her mouth that she was trying to sing I suppose she was practicing vocal music so he said that he was trying to make some noise so ऐसा लग रहा था कि वो शायद वोकल म्यूजिक को प्रैक्टिस कर रही है लेकिन वो ज्यादातर नॉइज की ही तरह मुझे दिखता था आई वुड लाइक टू से हाय ममता कुमारी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन बच्चा One day, she seemed very much excited and kept looking at the clock. एक दिन वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, बहुत ज्यादा happy and excited लग रही थी, और वो बार-बार clock की तरफ देख रही थी. At 11 o'clock, where somebody knocked and she let in a stout, dark man with trouser-backed hair. Okay. So उसने क्या किया एक छोटा हाइट का मैन एंटर करता है 11 बजे डोर पे कोई नॉक करता है एक छोटा डार्क मैन एंटर करता है नाउ ही सैट डाउन एट वंस एट द पियानो वो आते साथ पियानो पे बैठ जाता है एंड प्लेड व्हाइल शी sang फॉर हिम और फिर वो पियानो को बजाने लगता है और फिर वो गाना गाने लगती है when she finished she laid one hand on her bosom and looked at him so जब वो फिनिश करती है तो शी अपना वो एक हाथ से वो अपने बॉजम पे अपने चेस्ट पे वो अपना एक हाथ रखती है और फिर वो उसे देखती है जैसे वो थक गई हो गाकर so he shook his head and she leaned against the piano वो उसने अपने हैंड को ऐसा अपने हेड को ऐसा शुक किया और फिर वो पियानो पे थोड़ा सा रेस्ट करके वो खड़ी हो गई 2 years already she said speaking slowly do you think in 2 more or even longer so ये वो बोलती है 2 साल हो गए हैं मुझे क्या आपको लगता है कि मुझे 2 साल और लगेंगे या फिर और उस 2 साल से ज्यादा लग सकते हैं सीखने में The man shook his head again. लड़के ने अपना जो आदमी था उसने अपना सर फिर से हिलाया. You waste your time, he said. Roughly, I thought. So उसने बहुत roughly, बहुत cruelly उसने बोला you are wasting your time. The voice is not there. तुम्हारे पास वो आवाज नहीं है गाने की. And then he looked at her in a peculiar way, in a very uneasy way. उसने उसकी तरफ देखा, लड़की की तरफ उस आदमी ने देखा in a very uneasy, peculiar way. But the voice is not everything. He went on. फिर वो आगे जाकर बोलता है, लेकिन voice ही सब कुछ नहीं है. Voice के अलावा भी there are things. You have looks.
वो बोलता है तुम्हारे पास क्या बात हो गई, तुम्हारे पास वॉइस नहीं है तो तुम्हारे पास लुक्स है, आई कैन प्लेस यू, और मैं तुम्हें एक अच्छी जगह प्लेसमेंट दे सकता हूँ। एज आई टोल्ड यू, इफ द गर्ल पॉइंटेड टू, इफ आई टोल्ड यू, इफ इफ पे वो आकर रुक जाता है। उसने बोला कि मैं तुम्हें प्लेस कर सकता हूँ अगर तुम, यहाँ तक वो बोलता ही है तो गर्ल पॉइंटेड टू द डोर विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड द डार्क मैन लेफ्ट द रूम। सो गर्ल, लड़की ने तुरंत उसे दरवाजे की तरफ दिखाया कि दफा हो जाओ। उसने कुछ बोला नहीं, उसने दिखाया, और वो आदमी डार्क मैन वो रूम छोड़ के चला जाता है। Now, about that time, somebody else knocked at the door. उसी टाइम पर जब वो व्यक्ति बाहर जाता है, somebody else and knocked at the door. Thank goodness, I said to myself. So now the plant said to himself that thank goodness कोई और आया. I hope it's somebody that gave enough to stand a bird and a bottle to liven things up a little. सो प्लांट अपने आप को बोलता है कि थैंक गॉड कोई आया, आई होप कोई ऐसा आया हो जो थोड़ा सा यहाँ पर लाइट ले आए, थोड़ा सा यहाँ पर लाइफ ले आए, अ लिटिल। टेल यू द ट्रूथ, दिस लिटिल गर्ल मेड मी टायर्ड। अगर मैं सच बोलूं तो दिस लिटिल गर्ल, ये जो लड़की है, ये मुझे बहुत ही सिक और टायर्ड कर रही है। अ रबर प्लांट्स लाइक टू सी अ लिटिल स्पोर्ट्स नाउ एंड देन। सो वो बोलता है कि एक रबर प्लांट को थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट चाहिए, बट दिस गर्ल इज so non-entertaining, so she is making me tired. Okay, I do not suppose there any another green thing in New York that sees as much of gay life. सो मुझे नहीं लगता है न्यूयॉर्क सिटी में कोई भी ग्रीन थिंग मतलब कोई भी प्लांट ऐसा होगा जो इतना सैड लाइफ, ग्रे लाइफ मतलब सैड लाइफ देख रहा होगा, किसी की विटनेस कर रहा होगा। Now when the girl opens the door, in step up a young chap in a traveling cap, pick her up in his arm, and she singed out, "Oh Dan." Now जैसे ही लड़की ने दरवाजा, उस बच्ची ने दरवाजा, लिटिल गर्ल ने दरवाजा खोला, क्या एक वहां पर एक चैप मतलब एक पर्सन, एक बॉय, एक मैन, अ बॉय वाज स्टैंडिंग देयर, वो ट्रैवलिंग कैप पहना हुआ था, एंड he picked her up in his arm and hugged her and stayed there long enough to, well, you have been a rubber plant too sometimes, I suppose. सो ऐसा ऐसा वो रबर प्लांट अपने में बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि ये लड़का भी कभी ना कभी रबर प्लांट होगा, ऐसा लग रहा था जिस तरीके से वो लोग लॉन्ग इनफ दे वर hugging each other. Okay, now you have got to go back with me, says the young man. Now वो young man बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ इस बार चलना पड़ेगा। I have come 2000 miles, मैं 2000 माइल्स चल के आया हूँ, मतलब कि मैं आया ट्रैवल करके आया हूँ तुम्हारे लिए। Aren't you tired of it? Yes, best. सो उसने उस लड़की को एड्रेस किया एज बेस्ट कि क्या तुम अब थक नहीं चुकी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। यू हैव केप्ट ऑल ऑफ अस वेटिंग सो लॉन्ग, हैवंट यू फाउंड आउट येट व्हाट इज बेस्ट। सो तुमने हम सबको दो इतने सालों तक इस मतलब वेट कराते रही हो, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा? यू शुड कम विथ मी, यू शुड कम विथ अस। The bubble burst only today, says the girl. तो उसने बोला कि मेरे जो ख्वाब का बबल था, जो मेरे ख्वाब का जो गुब्बारा था, वो आज ही फूटा है। Come here, Dan, and see what I found the other day on the sidewalk for sale. So उसने बोला कि come here, Dan, चलो अंदर चलो, आज ही मेरे सपनों का गुब्बारा फूटा है, आओ अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मुझे आज क्या चीज सेल पे मिली। The other day जो मुझे सेल पे मिली। She brings him by the hand and exhibits you yours truly. So वो अपने हाथ से पकड़ के डैन को इधर लाती है और वो exhibit मतलब वो शो करती है उसे yours truly,
How whatever got away up here, who can call, who can tell? I bought it with almost the last money I had. So वो बोलती है कि मेरे पास जो आखिरी मनी था, आखिरी जो पेनीज बचे थे, आखिरी जो सेंट्स बचे थे, उससे मैंने ये खरीदा है कुछ भी दिन पहले. I would like to say hi to Anand Chaube. Thank you so much, Bacha, for joining in. Thank you so much. Moving ahead, he looked at me, but he couldn't keep his eyes off her for more than a second. So वो क्या करता है, वो मेरी तरफ देखता है, लेकिन वो बेस्ट से अपनी आंख हटा नहीं पाता है. Do you remember the night, Bess? He said. So वो उसे बोलता है, क्या तुम्हें वो रात याद है, Bess? When we stood under one of those on the banks of Bayou, and what you told me then? क्या तुम्हें याद है कि जब हम लोग एक ऐसे ही पौधे के अंदर में खड़े थे और तुमने मुझे उस दिन क्या बोला था? Glivikins, I said to myself. Now the plan said to himself, Glivikins. That he made a small words like Glivikins. Both of them stand under a rubber tree. Seems to be they have stretched matters somewhat. So वो बोलता है कि है ना, तुम दोनों ये दोनों रबर ट्री के अंदर खड़े थे, उसके अंडर खड़े थे. शायद उन्होंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया अपनी स्टोरी को, क्योंकि रबर ट्री इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल ट्री दैट ग्रोज इन अ प्लांट दैट कैन नॉट बी अ वेरी शेडी ट्री. सो उसके अंडर में कोई नहीं खड़ा हो सकता है. सो उसने बोला कि अच्छा, तुम लोग रबर ट्री के अंदर में खड़े थे, ये शायद तुमने कुछ ज्यादा ही अपनी कहानी को स्ट्रेच कर दिया है. Do I not she say, looking at him and sneaking close to his vest, and now I say it again, it is to last forever. Now she said, do I not? Yes, I know what I have said. बच्चा Dan may be his boyfriend or his family. मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि Dan उसका हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या फिर उसकी फैमिली हो. और या फिर हो सकता है कि उसे जब वो यहाँ पर अपना वोकल म्यूजिक को प्रैक्टिस करने आई होगी, तो उसकी फैमिली भी बोल रही होगी कि नहीं, हमें जहाँ से वो है वहीं पर चले जाना चाहिए. लेकिन वो ऐसा लड़ झगड़ के आई होगी कि वो टाइम चाहती होगी कि मैं वोकल म्यूजिक कर सकती हूँ, उसे ऐसा लग रहा होगा. और वो 2 साल तक यहाँ प्रैक्टिस कर रही है. नाउ डैन हैज कम एंड ही सेड दैट कम अलोंग विद अस, दैट मींस विद हिज फैमिली. सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं, चलो वहां वापस चलो. ओके ना ना फ्लैट में कौन रहता है बच्चा, जो अपने शहर छोड़ के, जैसे कि अगर आप दिल्ली जा रहे हो रहने को, तो आप फ्लैट में रहोगे, क्योंकि आप अपना शहर छोड़ के दिल्ली जा रहे हो रहने को, या कहीं पे बैंगलोर जा रहे हो, तो आप फ्लैट में रहोगे. तो आपका शहर कहीं और है, हो सकता है इसका भी शहर कहीं और हो जहाँ पे उसके फैमिलीज हो, इसलिए शी इज सेइंग कम विद अस. नाउ she looked at him and धीरे से उसके वेस्ट पे आके, उसके चेस्ट पे ऐसा लीन होकर वो बोलती है, and I say it is again, it is to last forever. वो बोलती है कि ये आखिरी तक चलेगा, this is going to last forever. Look down as its leaves, how wet they are. So वो बोलती है, देखो उसके पत्तों को कि कितना गीला है ये पत्ता. Those are my tears and it was thinking of you that made them fall. So वो बोलती है कि देखो इस पत्ते को, ये कितना गीला है, ये गीला किससे है? It is by my tears, and I was thinking of you that made these tears fall off. Right? Moving ahead, the dear old Mongolias. Now the young man said, the dear old Mongolias. Mongolias क्या है बच्चा? मंगोलिया एक बड़ी ट्री है, एक बड़ी ब्यूटीफुल फ्लावरिंग ट्री है. Pinching one of my lips, I love them all. So वो young man बोलता है उसको एड्रेस करके कि dear old Mongolia, वो उसके एक पत्ते को छूता है और बोलता है कि I love them all. Now they are now look what happens. Mongolia, well, would not that say those innocent thoughts? I was a Mongolia. What the well? Wasn't that tough on a genuine little old New York rubber plant? So what happened? The girl thought this rubber tree was a Mongolian tree.
मंगोलिया का ट्री था, मंगोलिया प्लांट था, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने घर पे लेकर आती है। वो आदमी भी जब उसे देखता है उसे लगता है वो मंगोलिया है। So the rubber tree says to himself, isn't it too tough for a genuine little old New York का रबर प्लांट के लिए? क्या ये थोड़ा ज्यादा ही जाती नहीं हो गई कि ये क्या है, ये मंगोलिया मुझे समझ रही है, दिस इज अ मंगोलिया ट्री बच्चा। इसीलिए वो लोग कह रहे थे कि हम लोग उसके शेड के नीचे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्री हो जाती है और इसके शेड के नीचे आप खड़े हो सकते हो, रबर ट्री के नीचे आप नहीं खड़े हो सकते हो। Is it so? Now I guess you have understood the story. This was a beautiful story with a twist at the last. So I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बच्चों 6th standard की class Prerna Prakash I will be conducting very soon, and now with this I have come to the end of my session. If you have any queries you can post me on the comment box, and also you can write it to me. आप मुझे Instagram और Telegram पे follow कर सकते हो, उसका link आपको Telegram और Instagram का नीचे दिए गए description box में है। If you liked my content, do hit the like button because this will not take much of yours. So it will appreciate me to create new contents, bacha. And also, if you are new to my channel, subscribe to it, as it will give you a notification कि आप लोगों को पता चलेगा कि कब नया session आ रहा है। And also share with your friends, comment down below ताकि आप मुझे आप बता पाओ कि आप और क्या चाहते हो, what should I bring next, so you can tell me that. With this I will take a goodbye. Thank you so much for joining in. I will be visiting you. I will be